dear colleagues who are attending today's session of BKBCK expressions. So day before, actually this our series, we started inviting our own professors, and then definitely they are to be followed by 3 newly selected associate professors. So that series we have started, or their expressions we have requested in this BKBCK expressions at 4 o'clock. So 3 of them, that is Dr. Swapna Samel, Professor, I will say Professor Swapna Samel, Professor Maninder Kaur, and Professor Madhvi Thakur Desai, they have already shared their experiences for their career growth a day before. And today it is a turn of Professor Mahendra Khandpekar and Professor Balkavi Suranjay. So for their professorship, they have taken a pain, I will say. They have worked hard to achieve that by doing a research in their own field, maybe by a different method. Someone must have concentrated on the research papers, someone concentrated on the number of PhDs guided, someone must have patented their intellectual property, or in a different way to have that requisite qualification which is called as API requirement during their tenure of the service in the various periods. And all of them, they have successfully done that. And hence we requested all of them to speak on their personal growth, achievement, career path, we will say, uh, to share with all of us so that everyone will come to know that how they have achieved that. At the same time, they can talk about what are their plans for the future for themselves as well as for their department, so that the college will also get an advantage of their growth and the departmental growth. So with this, may I now request Professor Mahendra Khandpekar to share his experiences with all of us, and then definitely we will request Professor Balkavi Suranjay also to speak with. So Professor Mahendra Khandpekar, before I request, I wish to extend a warm welcome to both of them for the today's session of BKBCK expression. We also welcome our director sir and all the faculty members for the today's session of BKVCK expression. So Professor Mahendra Khandpekar sir, please. Thank you very much, Avinash sir. Respected Dr. Naresh Chandra sir, Director Education, Dr. Avinash Patil sir, Principal, Birla College, Dr. Harish Dubey sir, Principal of Knight College, all Vice Principals, and all colleagues and my dear friends. Whenever I am asked to speak, of course, in expressions, it takes me back to many years. And soon after completing my MSc from Institute of Science, which was a renowned research institution then, I joined for my PhD. At the same time, I was working in Birla College also. I hope I'm audible. Am I audible, please? Yes. Yes, you are audible. You are audible. Okay. So I remember writing a small paper, very first paper, I would say, on infrared spectra of the molecule which I was being developing slowly in Institute of Science. And then my first presentation was there in Srinagar, HNB Garhwal University, they used to call. And then I had just joined college and I requested Principal Dr. Naresh Chandra that, sir, I want to go for the conference. And so immediately he said that how many days you will need. So I said that time it was not possible for me to go by plane. So I went by train and I said that it will take almost 10 to 11 days. So I went for the conference, came back, and it was all 11 days. And then sir said that, okay, we will grant you sick leave and CL somehow. And he accommodated me. Whenever I used to go for research, then we had some time, and then we have to just give guides letter
to sir that we are going for research to so and so place and we need leave for 2 days. Immediately he would sanction. So such was like his heart used to melt for research, I would say then. And then when I joined ISC for research, it was altogether a different thing then, because as I said, it was a renowned research institute having almost, I would say, majority of international and national journals. And Dr. Suryavanshi was our director then of the institute. And most of the time we used to spend in the institute. So morning hours, I used to be in the college and around 3 o'clock. I would to start from here and by 5 o'clock I used to reach institute. By then the institute time is like it's all going to close. But then since it was a research institute, so all the keys were with the watchmen, so we can use the labs and library at whenever we wanted. So there actually I started learning slowly, because when you have so many journals to look at, refer to, and read them, so it gives you totally different perspective. I started looking at, let us say, first the Indian journals, simple ones. Okay, and then of course the international journals. And then slowly we started to know that how we are going to go from the simple to the more complicated ones. So I would say that the library of Indian Institute of Science had a great impact on me then. And then, as I said, that by 5 o'clock we used to reach and institute used to close. So after that we had to, actually work. So the guide used to assign the work, that what all things you have to do, and within a week then he would take a review of that. TIFR was very close to us, and I'm sure Vinod Narayane sir is here. So he was contemporary to me there, maybe 1 or 2 years junior. He was working in the zoology lab, which used to be on the third floor there. And then since TIFR was closed and many of us, our scientists there in Institute of Science were associated with TIFR. So we had opportunity of going to TIFR many times. And TIFR was a very open institute, I would say, where there were a lot of machines, of course, a lot of funding and all. But the thing was you had to work on your own. So if there's a machine, you have to learn about that machine first, and then you have to operate it. Similar for Xeroxing and all that. It was all free, but I still remember TIFR because there's an open day and I still take my students there on that day. It's a very special day because many students with their parents come from all over India to have a look at that institution. And there are so many things on the display, experimental and all that. They show the labs and it is totally free. So it creates motivation to the students, as well as we also learn something new. What is the recent research going on there? So I just wanted to mention you this, and I would quickly pass on to some slides which I have made on this occasion, which I feel I should present before you. So Pritam, am I allowed to share those slides? Okay, I will just try. Can you see the slide? Yes, yes. Thank you, sir. So just an way of how we go. See, years before, when there were no distinctions between physics, chemistry, biology, we were all in natural sciences. And still this happens to be a very big, I would say, initiative right now in many of the institute across the world, which are well-known, renowned institutes. Okay, so you'll always find them with the Department of Natural Sciences. So I used to wonder what this natural sciences. So what teaching we used to do when we joined the college was somewhat traditional, and we just started doing research. But if you look at very old disciplines, like when we were in school, and when we did not have knowledge, because it is only from sixth or seventh that we start learning science, and then we distinguish between the sciences, that is physics, chemistry and biology, but not until then. Until then we are, I would say, real investigators, asking so many questions, okay, though it belong to whichever field. Okay, so since I was in Centurion School and we had very
nice group of teachers. So Jane teacher and all, I just remember they created interest. And then slowly as we went on, we started going toward the traditional type of teaching, the departments which we right now have, physics, chemistry. So I would say that we actually create a distinction between these three types of, or maybe types of sciences. But what is needed now, slowly as we went through, because this is down the memory lane almost 30 years. So as we went through the traditional type of teaching, let us say, we went to research, which is more specialized form of, I am going to come to that again. Okay, specialized form of education, or a systematic form of education. Okay, and now where we find ourselves. Now slowly you will find that we all started doing research, we did research, and we went to something called as interdisciplinary research now. So in whichever field you go now, at this moment of time, you will find you have to again touch all the subjects. For example, we have important departments of biotechnology or biosciences in the university, and you will find that all of them are actually touching. One of the major field in this line is our department also started material sciences, which is you will find incorporate so many sciences into it, including biological science and all. So again, we go from, let us say, a traditional type to research to interdisciplinary research. And where do we come? We come again to the same point of natural sciences, where we learn all the subjects together. Okay, so I just wanted to show you that how it is in a circle we go. Maybe we can say that we start from somewhere and again go back to the same point. Now, why research? Most of the things have been discussed of why research. So you will see that doing research, you can be without research, but then now UGC has said clearly that you have to be a doctorate, okay, and you have to publish papers and you have to build your API. More about API and all those details will be talked by Professor Suranjay there, so I am not going to speak to that, but we know that it is a systematic investigation. So what we learn there in research, we have to also incorporate in our teaching. So what we learn, what we teach has to change with time slowly as you are proceeding in research. And then there are steps of doing research, that it is not haphazard. It has to go in one line. Right? And then the main part of research, I would say, is present your work. So when we are doing research, there are things that which we misunderstood, or we are mistaken of how these things are taking place. Maybe we are wrong. So when we present our work before the peers, they are, or the specialized scientists, they would be able to tell us that what our research would be, or what lacunas are there, or where we are going wrong. So I would say that research gives us an opportunity to present our work. Then it is also useful to tell our students, for example, because I have been always more student friendly, I don't know, because I have always been a learner throughout my life. So I'm just telling you, the knowledge formation is the main thing which we have to make students understand. And when there is knowledge formation, there has to be some ups and downs, and we have to tell them that how exactly we have to come to the knowledge which we are teaching you. Okay, and how it changes them, what will be different changes which can take place, how it originates and all that. It is a motivation to self, I would say. As Swapna madam mentioned rightly, that we never started doing our research for API, because API was not there then. It had just come, I would say. And let me tell you that this was the first time, I think most of us, even Avinash sir, Avinash sir, we had all applied actually with API, because all our placements were without API before this. Okay, so it is a motivation to the self, and since you are motivated, your students will of course will gain benefit out of it, and they will be also motivated. So I think research gave me a new idea of how to look at things, how to observe properly, because learning by observation is also a very important part of learning science or research. Okay, and how new ideas come to you. You will find that all these things are tried to be incorporated in NEP now.
national education policy, because it is becoming open. It is giving autonomy to the institutions on experimentation basis. You can always try new things. And then what I want to tell you about this is, of course, there are many things, but one thing there is learning in one's mother tongue. Okay, this experiment we did years before, and in my previous expression also I said that when this is done in school forming years, for example, and we learn in our own mother tongue, we never forget. Okay, so this is the one of the thing where you can, research upon, and whether you can make your learning more fruitful, more enjoyable. Now with this, I will directly pass on to some typical points. Only 2 points are there. Uh, so most of the time you'll find that now this thing has come, UGC care list. So many of us don't know about this much. Okay, that what is care list and why UGC wants us to present in this care list only. There are no other journals than UGC care list. So I just put this slide here. Uh, Now you will find that if you go to UGC care list, of course you have to go to University of Pune site, and in that you can just say UGC care list. You have to register. It is all free. You have to register yourself with your email ID and password, and then you can enter that site. Okay, after entering that site, you will find that there will be different classifications like this. So some journals are classified into group A, some are classified into group B, and of course Scopus listed journals. Now all these journals are also in master list, or let us say Clarivate list, which also UGC accepts. Okay. Now what is most important in this is that there is a list of cloned journals. So journals which have same name, but they are different. Okay, so you have to look at these cloned journals, because many a times after you publish your results, you will find that it was a cloned journal, and then there's a problem. Okay, so you then list of removed journals or newly added journals. Sorry, I could not put there. Removed journals or added journals are also there. Okay, so once you enter this site, you can find out in group A what are the journals. Okay, group B what are the journals, or if not, what are the Scopus index journals. This is the indexing. Okay, index journals. Okay, then talking of quality, because always you might have heard this word in our director's mouth is always saying that we should rest on quality. So when quality factor comes, you will find there's a talk of impact factor. Okay, otherwise there is no talk of impact factor. Okay, so the impact factor which is considered for your placements henceforth, okay, will be Thomas Reuter's impact factor. And it does not mean that all UGC care list journals have impact factor. UGC care list journals may be in Scopus, okay, or they may be in group A or B. They may not have impact factor. Okay, all of them don't have. So you have to specifically look at this. And this type of arrangement is also there in the site I am saying. Once you enter this site, go to the journals. Again, they will ask you to, for Thomas Reuter, they will ask you to just put your password and email ID, and you can actually check whether it belongs to or has some Thomas impact or Reuter's impact factor. Okay, so when you talk of quality, you have to also look at this particular factor. Okay, then as you will see that there are two parts, the journals, one which we say science journals and other journals for arts and commerce. Okay, so every journal will have this number. Okay, every registered journal will have this number, but this doesn't have to necessarily have quality. Okay, it is just a number for classification, like when Kiran sir classifies that where the book is to be kept, so he will refer to this journal and he will accordingly put that journal there. But that doesn't mean that it has got some kind of impact factor or has any quality. Okay, most important of all now, why UGC is coming up with the UGC care list and all, is there is a lot of copying or plagiarism, or that is maybe it is unwarranted and all. So how do you find out? So we have that softwares now, what are called as plagiarism software also. I think one part of it is there with Kiran sir, and also the college is in the process of having this software. So before you send your write up somewhere, or if you feel that you should check your paper first or write up first, then this can be done.
Many engineering colleges are also using this software. So I would just go to the last one. Okay. So as Suranjay sir is going to tell you about how there are 6 ways in which you have to put your work, for the API. Okay, and out of that you want API in 3 of them. Okay, so right now you are new, you're not research guides. Okay, so one part of that you have gone already. Okay, because there is some score for how whether you have guided research or not. Okay, or maybe you are not very firm with patenting, or maybe collaboration and all that. So there also you lose. So you'll find that the 3 major parts. One, as I said, is a publication of paper, and second, maybe with publication of paper you also present it, right? Or you give talks in different colleges, or different institutions. So that can also go in one group. So paper publication in one group, your presentations in another group. So you have got already 2 groups, and this third one is the project one. Okay, so as Avinash sir also tells in all the meetings, that when you want to apply for major project, okay, you need lot of quality publications, or for that say collaborations. Okay, so I would tell the newcomers that not to go directly for this. Of course, you can go to that after you are firm in your research, but otherwise you go for this University of Mumbai or other bodies as the stream may be. Okay, where they give small projects, maybe under 50,000 or so, but at least you can show in research projects that yes, you have undertaken, though it be for 1 or 2 marks, whatever it is, but you can always uh, uh, you know go for a project like this, a smaller project, not necessarily a very large one. Okay, so I think with this I would stop here with some of my just a minute, yeah, and I wish Suranjay sir continues. Yes, but before that, I will take a minute. Very nice to hear from you, Dr. Mahendra sir. And you mentioned about me also, and really great days, I will say, when we used to move around in the college campus chatting about some books and the research papers. But still, we can have those days. You please find out the time when we can have a walk in the college campus and discuss some research projects and the research papers. Yes, Okay. sir. Thank you very I much. And I remember yes, this. I remember the botanical garden. I can yeah, never forget the medicinal herbs. I would say that Avinash sir and all, like, they used to. Still, we have that yeah. below, and there are a lot of medicinal plants. So if See, someone is and interested, I will like to share with all our colleagues that both of us joined in 1990. And Dr. Mahendra used to spend more time in botany department than in physics yes, department. And everyone used to ask him whether you are in physics or you are in botany. And he used to take it lightly, I will say, or in his own stride. And he used to say that I study physics in botany. So the great days. And definitely we cherish those memories, Dr. Mahendra. And Dr. Madhu Natekar also used to be with us. yes, And that time, Chavre sir, he was head of the physics department, and so many stalwarts and the seniors were there. Even in botany department, Fatak madam was there. In zoology department, Paprikar sir, and myself, Mahendra, Dr. Ajit Gokhale, Madhu Natekar, and we used to move around in the campus, enjoying the campus with some books. Okay, great days, and I still remember that. Now, may I request Dr. Professor Balkavi Suranje to share his memories and his experiences about his career growth. Professor Suranje, sir, please. Suranje, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. I ये am पूरा confused. पूरा स्टेज आपके लिए अवेलेबल है सर. प्रणाम सर, प्रणाम. प्रणाम प्रणाम. आदरणीय शिक्षा निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र जी, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पाटिल जी, सभी
उप प्राचार्य एवं मेरे सहकारी मित्रों, आज मुझे दूसरी बार आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिला और इस अवसर को प्रदान करने का सुअवसर आपने इस मंच पर देने का प्रयास किया, इसलिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम अब मैं आत्माभिव्यक्ति के बारे में या मेरी छोटी सी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ एक लक्ष्य केंद्रित करके छोटा सा व्याख्यान यहाँ पर मुझे देना है। मैं जब ओरिएंटेशन मुंबई विश्वविद्यालय से कर रहा था, उस समय डॉक्टर सिंह बाहर के प्राध्यापकों को मार्गदर्शन देने के लिए आए, तो उन्होंने एक घोष वाक्य कहा था, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो ही मंजिल पर पहुंचा फिर नया सफर है। जैसे ही हमने एक लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे ही हम दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने का सुअवसर ढूंढते हैं और हम वहां तक जाते हैं। जैसे सभी मित्र 10वीं पास तक नहीं रुके, फिर उन्होंने 12वीं की, बीए किया, बीए, बीकॉम, बीएससी, इस तरह से फिर उन्होंने शोध कार्य किया। ऐसे एक एक लक्ष्य को केंद्रित करके वे आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ मुझे प्रमुख रूप से एपीआई फॉर्म के संदर्भ में आपको कहना है। तो सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को पता होगा है ही कि यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ में पीएचडी हुआ है तो उसका प्रथम प्रमोशन 4 वर्ष में होता है, और यदि कोई एमफिल है तो उसका प्रथम प्रमोशन 5 वर्ष में होता है, और इनमें से पीएचडी या एमफिल नहीं है तो उसका प्रमोशन 6 वर्ष में होता है। ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात है, फिर भी इस पर मुझे लक्ष्य केंद्रित करना था। फिर दूसरा जो प्रमोशन है 5 वर्षों के बाद आता है। तीसरा प्रमोशन 13 वर्षों के बाद आता है, जिसे एसोसिएट कहते हैं। और प्रत्येक प्रमोशन में, यानी पहले प्रमोशन में हम देखते हैं कि हमें कैटेगरी 3 अर्थात जो रिसर्च वर्क है उसमें 5 अंक चाहिए, दूसरी पदोन्नति के लिए 10 अंक चाहिए, एसोसिएट के लिए 15 अंक चाहिए और प्रोफेसर के लिए 20 अंक चाहिए। पर आज हम देखते हैं कि एसोसिएट के लिए भी पीएचडी इज कंपल्सरी, यानी वो अनिवार्य शर्त मानी गई है, और जो पीएचडी होगा स्वाभाविक है वही प्रोफेसर होगा। तो 6 पे में हमने देखा था कि जो एसोसिएट प्रोफेसर जितने होंगे उसके 10% ही प्रोफेसर हो गए, परंतु ये बड़ा चुनौती भरा काम था। 7 पे जैसे आया वैसे ही इन्होंने ये बात 10% अर्थात 10% एसोसिएट के होने चाहिए, ये शर्त निकाल। हम जैसे लोग या पुरानी पीढ़ी के मुझसे 10 वर्ष 8 वर्ष जो ज्येष्ठ रहे हैं छात्र थे, परंतु ये तकनीकी समस्या के कारण उन्हें ये जो प्रोफेसर का जो वो एपीआई के थ्रू उन्हें नहीं मिल पा रहा था। आप देखेंगे सकता है, और कुल जब से सेवा में लगे हैं तब से लेकर आज तक उसे 110 अंक चाहिए। अब किसको कितने अंक चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं। आपको मैं बताऊं कि सेमिनार में अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हैं
और वो आज मेरी भाषा इंग्लिश हो जाएगी सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो और दिमाग के ऊपर से जाएगा। इंग्लिश का मतलब हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला रूप है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो जो इंटरनेशनल सेमिनार होगा उसमें पेपर प्रेजेंट करते हैं तो 5 अंक, नेशनल है तो 3 अंक, और यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो 2 अंक उसे प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी इसमें प्रोफेसर कैश में एक खासियत है कि आपने एसोसिएट होने के 3 साल के बाद कोई भी 3 वर्ष आप ले सकते हैं, और उस 3 वर्ष में कम से कम 3 पेपर आपके यूजीसी लिस्टेड या पीयर रिव्यूड में आपके वो आलेख आना चाहिए, कम से कम 3 आना ही चाहिए। और जब से आप लगे हैं तब से, यानी ये 3 और वो आप +7 कर सकते हैं, +7 नहीं भी हो तो आपने जो 3 वर्ष लिए हैं उसमें कम से कम 10 होना ज़रूरी है। एक अलिखित रूप में ऐसा मान लिया गया है कि कम से कम 10 में से 3 आपके यूजीसी लिस्टेड होना ही चाहिए, 7 पीयर रहेंगे तो भी चलता है, क्योंकि 1-2 जगह पर ये कैश में जेडी ने ये रुकवा दिया था, खास तौर पे हिंदी और मराठी का जो प्रोफेसर का कैश हुआ था उनका मानना था कि नहीं, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, भले 7 पीयर रिव्यूड में वो चल जाएगा। मित्रों, अब मेरी अगर व्यक्तिगत हम बात लेते हैं तो मेरे पास 16-17 में एक भी यूजीसी नहीं था, उससे पूर्व था 2 थे। तो मैंने एक टारगेट रखा, जैसे 7 पे जैसे आया तो प्रोफेसर होने के लिए 10 यूजीसी लिस्टेड या अथवा पीयर रिव्यूड में चाहिए। तो मैंने उस 3 वर्ष में 18, उसमें से 8 यूजीसी लिस्टेड और 10 पीयर रिव्यूड, ऐसे 18 मैंने वो प्रकाशित किए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा महान काम है। जैसे हम कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी ते आवत जात सिल पर पड़े निशान। यानी हम बार बार अगर हम उसका प्रयास करते हैं, लक्ष्य केंद्रित करते हैं और उस लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वो प्राप्त किया था। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण उसे अप्लाई करने के लिए, प्रोफेसरशिप के लिए या किसी भी स्टेज 1 से 2 तक या स्टेज 2 से 3 या एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए, तो उसे आजकल मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अर्थात एफिलिएशन सेक्शन में आपको नामांकन करना होता है, और उस नामांकन में अपनी व्यक्तिगत जानकारी होती है, व्यक्तिगत, शैक्षिक, और आप लोगों ने जो भी रिसर्च किया है या आपके शोध कार्य है उस शोध कार्य को वहाँ पर दर्ज करना होता है। और दर्ज करने के बाद आपको वहाँ की जो 5,000 रुपये फीस है वो आपको भरनी है, और उसके बाद आप एपीआई फाइल पूर्ण रूप में सभी, चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या सीनियर मोस्ट टीचर हो, प्रिंसिपल, एक्यूएसी कोऑर्डिनेटर, सभी का हस्ताक्षर लेकर उन्हें दिखाकर और अंत में प्राचार्य के हस्ताक्षर लेकर फिर प्राचार्य यूनिवर्सिटी को वो लेटर फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एपीआई फॉर्म में पहले की तरह थोड़ा सा ये अलग है। पहले की तरह पार्ट ए है। पार्ट ए में हम देखते हैं कि उसमें जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, अपनी शिक्षा संबंधी जानकारी, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर संबंधी जानकारी, शॉर्ट टर्म आपने कब किया उस संदर्भ में जानकारी, जैसे कि पुरानी एपीआई में था। और यही एपीआई में यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, परंतु उसके टेबल थोड़े से अलग है। पार्ट बी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरा बदला हुआ है। मित्रों, पार्ट
बी तो हम तुरंत ऐसा ही भर देते हैं, परंतु उसमें जो एनेक्स्चर हम लगाते हैं, उस एनेक्स्चर को बनाना ये सबसे टेढ़ी खीर है। और यदि लक्ष्य सामने हो तो हम पहाड़ों को भी सरलतम से चढ़ जाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि इसमें टेबल 1 में टीचिंग प्लान होता है। अब ये टीचिंग प्लान 3 वर्ष जो दिखा रहे हैं, उन 3 वर्षों का, जैसे कि FY BA से लेकर हम MA सेकंड तक पढ़ाते हैं, तो उसके पूरे वर्ष का जो टीचिंग प्लान है, वो टीचिंग प्लान आपको टाइप करना होता है। और साथ साथ आपका जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल वहाँ पर दर्ज करना होता है। और वो दर्ज करने के बाद हम देखते हैं कि आपने कितने प्रतिशत लेक्चर लिए। तो मोस्टली यानी ज़्यादातर हम देखते हैं कि 90% से ज़्यादा हम व्याख्यान लेते हैं। आप कहेंगे 100% क्यों नहीं? क्योंकि हमने CL भी ली होती है। कभी कोई आकस्मिक मीटिंग आ जाती है तो उसमें 100% कोई भी अगर कहे कि मैं 100% व्याख्यान लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। उसमें एक तो CL ली होगी तो उतने लेक्चर वो कम हो जाते हैं। तो टीचिंग प्लान वहाँ पर जोड़ना होता है, और साथ साथ आपका टाइम टेबल, और FY से लेकर MA तक आपने प्रति सप्ताह में कौन सा टॉपिक लिया, कौन सा व्याख्यान लिया, वहाँ पर वो दर्ज करना होता है। वो एनेक्चर 1 हो गया। और दूसरा हम देखते हैं कि एनेक्चर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने कौन सी महाविद्यालय में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो उसमें कोऑर्डिनेटर PG, HOD, पहले मैं IQAC मेंबर था, दुर्भाग्य से मुझे निकाल दिया गया। मुझे कोई इसमें कोई गिला शिकवा नहीं, फिर भी उस समय 1 वर्ष मुझे रखा गया था। मेंबर ऑफ डिसिप्लिन कमेटी, एडमिशन कमेटी, कोऑर्डिनेटर हिंदी साहित्य, सरल हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन कोर्स, ये जो और उसमें आपने कितना समय, जैसे कि PG में मैंने 50 घंटे दिए, यानी पूरे वर्ष में। IQAC में 20 घंटे दिए हैं। डिसिप्लिन कमेटी में कितने समय, तो 15 घंटे दिए हैं। तो ऐसे टोटल 506 घंटे मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्क है उसमें दिए हुए हैं। और वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि एनेक्चर उसका बनाना होता है, और उसके लिए आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। आप सही में PG के हैं क्या? फिर वो दस्तावेज में अगर आपको पुराने नहीं मिलते हैं तो मैगजीन लीजिए। मैगजीन में सारी रिपोर्ट है। मैगजीन में PG की रिपोर्ट होती है, UG की रिपोर्ट होती है, हिंदी साहित्य मंडल की रिपोर्ट होती है। और एनेक्चर 3 में हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन, यानी आप प्रत्येक व्यक्ति एग्जाम का काम करता है, फिर वो इंटरनल असेसमेंट हो, एक्सटर्नल हो, पेपर सेटिंग हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उसमें एक एक करके, जैसे FY BA, SY BA, TY BA, MA फर्स्ट, MA सेकंड, इनके जो इंटरनल प्रश्न पत्र, ये सब की वहाँ पर जानकारी होती है, और हमने उसके प्रश्न पत्र सेट किए होते हैं। और इसी कारण वो पूरा एक सांचा बनाकर, और उसके नीचे कंट्रोलर एग्जामिनर, उनका हस्ताक्षर आपको लेना होता है। एनेक्चर 4 में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स रिलेटेड आपने क्या काम किया, क्योंकि वो API में आते हैं, सब एनेक्चर में आया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टडी टूर, डॉक्टर अंबेडकर स्टडी सेंटर में स्पीच दिया, आषाढ़ी एकादशी में सहभाग लिया, सीटिंग अरेंजमेंट हिंदी ट्रांसलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट सरल हिंदी एंड डिसिप्लिन, और उसमें आपने कितने घंटे काम किया, और उसकी जो पूरा टोटल है वहाँ पर वो दर्ज करना होता है। एनेक्चर 5 में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, जैसे कि उस समय मैं 17-18 में मैंने हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। उसके लिए 2 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चली थी, तो हमने 10-10 घंटे यानी 20 घंटा वहाँ जोड़ा है।
नवलेखन शिविर हुआ था, जिसमें 7 दिवस यह शिविर महाविद्यालय में था। तो प्रति दिवस के अगर 8 घंटे लेते हैं तो वहाँ 50 घंटे हो जाते हैं। सरल हिंदी पाठ्यक्रम, उसके 60 व्याख्यान थे और फिर उसके एग्ज़ाम वगैरह सब मिलाकर 74 घंटे। सर्टिफिकेट कोर्स अनुवाद का उसके 30 घंटे। तो इस तरह से एनेक्चर बनाकर फिर वो उस एपीआई में जोड़ना, ये आज की सबसे बड़ी विशेषता हमें वो दिखाई देती है। मित्रों, मैं आप लोगों से कुछ और बात शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ मैंने एक बात आपको एक नोट कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि एसोसिएट 3 वर्ष हो जाए और हम तुरंत अप्लाई करें। नहीं, कोई भी 3 वर्ष आप अगर किसी के यूजीसी लिस्ट में नहीं हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना लक्ष्य केंद्रित करना होगा। यानी अभी से 3 साल के बाद ही क्यों न मिले, परंतु वो लक्ष्य, वो टारगेट, वो उद्देश्य हमें निर्धारित करना होगा और उसके हिसाब से हमें वो काम करना होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये एपीआई के प्रतिवर्ष का एपीआई फॉर्म और उसको संलग्न एनेक्स्चर, उसके संबंधित डॉक्यूमेंट हमें जोड़ने होते हैं। और साथ ही जो यूजीसी अथवा पीयर लिस्टेड में जो आपने जो प्रकाशित किए हैं, उसकी एक स्वतंत्र फाइल कह सकते हैं या अलग से डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, और सीरियल नंबर, आपका आलेख, फिर आपने जिस पत्रिका में जो प्रकाशित किया है उसका नाम, उनका आईएसएन नंबर, इम्पैक्ट फैक्टर, ये इस तरह का कॉलम बना के आपको एक फाइल बनानी होती है। और वो ही महत्वपूर्ण फाइल है, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि पार्ट ए तो आपके कॉलेज का देखने का काम था, उन्होंने तो कर दिया, पर पार्ट 2 जो है वही हमें देखना है। और उसमें खास तौर पे जो 10 कम से कम होनी चाहिए, उसको जिस पत्रिका में हमारा आलेख प्रकाशित हुआ है उसको हाईलाइटेड कर देना है। उसका एक क्रमबद्धता हमारे सामने यहाँ यानी एक फाइल बनाकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सामने वहाँ पर रखनी है। और महत्वपूर्ण, जब हमारा साक्षात्कार होता है, जेडी, प्राचार्य या संबंधित जितनी भी जो मंडली बैठी हुई है, तो वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो काम आपने किया है, जैसे जो पहली स्लाइड जो आपका पद, आपके फिर आपने कॉलेज में कौन सी कमेटी में काम किया, कहाँ कहाँ आपके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दर्ज करनी होती है। और अंत में एक ध्यान रखना है कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, उस पर एक स्लाइड बनानी होगी कि भविष्यकालीन योजना आपकी क्या है। तो सब कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि ये कोई काम तो है बड़ा, काम छोटा तो नहीं है, परंतु सभी व्यक्ति समय पर अपना एपीआई फॉर्म भरेंगे, ये काम अच्छा हो सकता है। हमारे साथ क्या जब मैं एसोसिएट था तब एक दुर्घटना घटी थी। शायद मेरे साथ 11 लोग थे। साक्षात्कार यानी जेडी का कैश इंटरव्यू 2 दिन था। ऐसे डायरेक्टर साहब ने मुझे बुला लिया और कहा कि सबकी एपीआई फाइल बताओ। और तब मैंने अपनी एपीआई फाइल बताई और अन्य 10 लोगों की एपीआई फाइल नहीं थी। यानी 2 दिन उनका साक्षात्कार है, ऐसे समय में उनकी फाइल रेडी नहीं थी। ये बड़ा दूर अनुभव प्राचार्य के सामने, यानी उस समय के जो प्राचार्य के सामने, और उस समय मैं तो जैसे मेरी स्थिति रोने जैसी हो गई कि मैंने इन पर सब भरोसा किया, सबकी एपीआई फाइल के लिए मैं लगातार प्रतिबद्ध रहा। तो मैं एक सूचना देना चाहूँगा, प्रति वर्ष जैसे ही हमारा वर्ष खत्म होता है
तो उसके अंतिम दिनों में 30 अप्रैल तक सबका एपीआई फॉर्म भर के रेडी हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी भी हमारे जो मित्र है 5-5 वर्ष के बैकडेटेड साइन लेते हैं और फिर मुझे पूछने आते हैं उस समय प्राचार्य कौन थे, उस समय IQAC कोऑर्डिनेटर कौन था। तो 5-5 वर्ष बैकडेटेड हम उनका साइन लेते हैं और फिर कभी ना कभी हमें एहसास रखना होगा, जो IQAC डिपार्टमेंट है उसे सक्रिय होना होगा और उसे सक्रिय प्राचार्य डायरेक्टर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का 30 तारीख तक एपीआई नहीं आता है, एपीआई फॉर्म नहीं आता है जेरॉक्स के साथ, ओरिजिनल उम्मीदवार के पास या प्रोफेसर के पास रहे, परंतु 30 तारीख, हाँ कोई अगर कोई कष्ट है पर रीओपनिंग जैसे कॉलेज होता है उस समय तक भी नहीं आता है तो उसका क्यास रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत परंपरा इस बिरला महाविद्यालय में चल पड़ी है। मुझे पता है कि मैं प्रतिवर्ष, मुझे आज भी याद है कि किस तारीख को साइन करना है। डॉक्टर नरेश चंद्र जी ने कह दिया जाओ सुरंजय सर के देखो, क्योंकि उन्होंने समय पर भरा हुआ है और वो तारीख देखो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें एपीआई फॉर्म जो है समय पर भरना होगा और साथ ही IQAC कमेटी को वो अधिकार देने चाहिए कि उन्हीं के फॉर्म, जिनके फॉर्म समय पर आए हैं उनका कैश होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा, कभी हम पुराना फॉर्म भर रहे हैं, कभी नया फॉर्म भर रहे हैं और कभी यानी आप देखेंगे बहुतांश जो हमारे जो प्रोफेसर है वहीं पर 5 वर्ष तक कुछ नहीं किया और जब उनका प्रमोशन आया है तो फिर वो फाइल के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसी वजह से और एक सूचना मेरी होगी कि जो कैश के समय जो नॉन टीचिंग का जितना सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिलता। ऐन वक्त पर जब हमारी फाइल चली जाती है कॉल सेक्शन में, तब वहां से पता चलता है कि इस फाइल में सर्विस बुक के रिकॉर्ड चाहिए, उसके जेरॉक्स चाहिए। ये काम नॉन टीचिंग का है और उस जो हम जब फॉर्म भरते हैं कभी उस फॉर्म की जगह दूसरा नाम आ जाता है। तो ऐसे समय पर व्यक्ति प्राचार्य और डायरेक्टर साहब से निवेदन है कि नॉन टीचिंग का वहाँ पर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारण अभी सारे लोग सज्ञान हैं। बस मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैं अकेला ही चल रहा था, जानी बे मंजिलें मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मित्रों, अभी तो भविष्यकालीन योजनाएं, बहुत जल्दी आपको एक खुशी की बात आपके सामने घोषित होगी कि हमने साहित्य और विज्ञान मिलाकर एक डिवाइस तैयार किया है और उसमें हमारे डॉक्टर नागरे जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे ख्याल से ये भारतवर्ष का एक पहला कार्य होगा कि जो हिंदी साहित्य में कोई पेटेंट यहाँ पर ला रहा है। तो अब आगे हमारी यही इच्छा होगी, जैसे हम प्रोफेसर बने हैं अन्य मित्रों को भी हम प्रोफेसर बनने के लिए प्रेरित करेंगे और हमारे जो PhD के विद्यार्थी हैं उनसे हमें शोध कार्य पूरा करना है और कॉलेज अपनी प्रगति, महाविद्यालय की प्रगति, समाज की प्रगति और देश की प्रगति, इस तरह से मैं यही कहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपको प्राणपण से उस लक्ष्य को भेदना है, केंद्रित करना है, तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मुझे आपने सुअवसर प्रदान किया, इसलिए पुनः मैं शिक्षा निदेशक जी, प्राचार्य जी और सभी मित्रों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रोफेसर के समय डॉक्टर समय मैडम जी, डॉक्टर खानपेकर जी
और अन्य मित्रों ने जो सहयोग प्रदान किया, हम उसे नहीं भूल सकते। पुनः मैं सभी मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। क्या मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, यस सर। जी जी। और कुछ बोलना है? नहीं नहीं सर। चलो, सुरंजय सर, हमने आपका जो भी एक्सपीरियंस है सुना, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों से शेयर किया कि कहाँ पर आपको पॉइंट्स है, कैसे मिले, कैसे ला सकते हैं। और महेंद्र also shared many things for the persons who are working for their career growth, maybe whether it is stage 1 to 2, 2 to 3, or 3 to 4, and there are many eligible for 4 to 5 also, that is for the post of professor, and definitely it is of great help. So before we conclude, I will request our director, Dr. Nareshchandra sir, to speak about their career path. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So we are very happy. अभी प्रोफेसर सुरंजे ने अपने विचार एंड ऑल्सो आगे और क्या हो सकता है to make the system better, and from both the sides, college side as well as the person who is desirous of becoming professor. उससे पहले प्रोफेसर खानपेकर ने रिसर्च में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एंड आज से आई थिंक डे फोर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे वी हैड 3 professors, Professor Samir, Professor Thakur Desai, and Professor Maninder Kaur. We are yet to listen to Professor Meeta Bose, and also, as per the convenience of Professor Geeta Unnikrishnan, would like to invite her also. And that day I also said we will talk something more. I also would like to share, but again it is becoming 5 o'clock. So maybe we'll talk few points today and few points when Professor Meeta Bodh will be speaking, talking to all of us. That day we may share. I repeat, is a matter of great joy and happiness to all of us. In any institution to have so many like ours, having 6 professors and another 5, 6, 6, 7 are क्या बोलते हैं future ready, or they are ready to be professor at the earliest. So is a highly appreciable. On the one hand, research, publications, projects, patents, all these things have made us realize that these are the
ways to inspire, to motivate our young colleagues and to work in this direction. Also, Professor Suranji, and also I remember there were some, क्या बोलते हैं ये phrases, पत्थर तो उछालो यारो and all that, but it all indicates it is possible. But प्रोफेसर की पोस्ट अगर आसानी से मिल जाए तो फिर वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रोफेसर की पोस्ट, everyone should feel that it is earned by your hard work, and उसका जो enjoyment या उसकी जो एक sense of satisfaction होती है वो एक is in itself, it further motivates and inspires us. So easy तो कुछ नहीं होना चाहिए, मेहनत से ही काम बढ़ सकता है। But all 5 of our colleagues have expressed that aspiring professors or even associate professors, or the day you join as an assistant professor, we must set our agenda for self, for the department, and how we can contribute for the well-being, growth of our institution. और फिर उस रास्ते पे चलते रहना चाहिए। प्रोफेसर सुरंजय ने इतना बढ़िया, बिल्कुल मेथोडिक, बिल्कुल क्या बोलते हैं, वेरी सिस्टमैटिक, कि अगर मैंने किसी कमेटी में काम किया है तो कितने घंटे दिए, एंड दिस इटसेल्फ इज एन ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो राइट फ्रॉम डे वन हमने अपना एक डायरी बनाना चाहिए, और उसमें इन दिस ईयर किस किस कमेटी में काम किया, कितना टाइम दिया, क्या आउटकम है, टीचिंग शेड्यूल क्या रहा, उसका आउटकम क्या है, कोर्स आउटकम, जो जो आपने किया है उसका आउटकम के साथ उसमें उसकी नोंद होनी चाहिए। तो आगे 5 साल पहले और 2 साल पहले और पहले क्या हुआ था ये सब पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। और सुरंजी सर ने ये भी इशारे में बताया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगर थोड़ा सा कड़क हो जाए तो शायद थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइन। लेकिन सुरंजी सर या हमारे सभी प्रोफेसर्स को अगर इंट्रोस्पेक्ट करके देखें सब जन, अगर ज्यादा कड़क हो गया होता तो क्या होता। I agree, and it is very necessary. The office सपोर्ट जो आनी चाहिए या पेपर सबमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाने के लिए we will definitely take appropriate measures. तो आगे आने वाली जो अपनी लिस्ट है उन्हें उस तरीके की डिफिकल्टी ना हो। एंड अगर परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है टू स्ट्रीमलाइन, तो दवा जो सुरंजय सर बोल रहे थे वही सही है कि भाई अगर 30 अप्रैल को आपने अपना डेटा, अपनी फाइल कंप्लीट नहीं की अप्रेजल की, मैक्सिमम इज द रीओपनिंग डे तक आपने सबमिट नहीं की, तो फिर अगले उस साल को आप भूल जाओ। उससे अगले साल के लिए 3 साल तैयारी करो, तब होगा ना। इस सब के लिए भी अपने आप को इस पे बहुत सीरियसली सोचना है और उसी दिशा में काम करना है कि ये जो लेटर ऑन सिग्नेचर कराने का सिस्टम है या कौन सी डेट या क्या करें कैसा करें, वो चीज कैसे हम दैट
process itself can be fully streamlined. उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई. So मैंने, I think we have discussed a point at our meeting with professors over a cup of tea that अब हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो आगे आने वाले जो 7-8 जन हैं उनके लिए एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर का या जो प्रेरित वर्ड प्रेरित करने के लिए वी विल हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज. और एक जन एक को गाइड करेगा, हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, so that, and everyone has assured to that. So I am sure कि अगली जो प्रोफेसर्स की लिस्ट है, वुड बी प्रोफेसर्स की, वो काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, टाइमली होगा, और जो हैसल्स इस बार थी वो आगे नहीं होगी. ऐसी कोशिश कॉलेज की तरफ से, ऑफिस हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो या हमारे कलीग्स हो, हर तरफ से वही एक कोशिश होगी. ये तो हुआ, और अभी पूरा सेशन होना बाकी है. प्रोफेसर मीता and also we will request Professor Geeta Unnikrishnan, then we can develop an action plan, an agenda for that, और वो आने वाले नए जो अगले 7-8 जन हैं उनके लिए और प्रेजेंट प्रोफेसर्स की we will have one more meeting in the conference room, and पूर्व तैयारी and all that process we will start. Once again, thank you so much. It was thought that we should have, and you have beautifully and appropriately have expressed your views, and it also reflects how to achieve greater success in academic life, also indicating on this path. We know Professor Khanpekar is the only DSC, तो आगे ऐसा हो सकता है कि पेटेंट शुरू हो गए, इन्होंने ही शुरुआत कराई, अब हिंदी में आने लगा. अभी थोड़े दिन बाद हो सकता है हिंदी एंड विज्ञान या साहित्य और विज्ञान के साथ, साहित्य का मतलब हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों जुड़ सकते हो, क्या पता, या सोशल साइंस एंड समथिंग कैन हैपन. सो इट इज गिविंग ए न्यू डायरेक्शन and very positive. So we all stand to support all these good causes. And I would also appreciate the efforts of Dr. Nagare, because a reference was made. He has been pursuing the cause very rigorously with all the colleagues or most of the colleagues to take it कि ज़्यादा से ज़्यादा patent, what can be done, and उनकी help support सबको मिल रही है. So it's very good. I also wanted to share कि ये जो अभी नेक्स्ट में अपन 3 एसोसिएट प्रोफेसर जो अभी हुए, it may be tomorrow, day after, or Professor Avinash Patil will definitely must have talked today whether we can have tomorrow. तो इसे एक प्रोसेस बना के कि we will have a list of our colleagues due for professor posts, associate professor colleague due for this, and what are the requirements. And before 30th April this year, उन सब कलीग्स का, चाहे वो 223 हो, 324 हो, सबकी अपने आप में अप्रेजल एंड द फाइल इज रेडी, signed, and it is put in a with all documentary evidences in place. तभी प्रोफेसर सुरन जी जो बोल रहे थे या सबके मन में जो इन लोगों ने मेहनत करके जो लाया वो सार्थ होगा. So this time
we all together will see that every colleague of ours has completed his or her papers with proper documentation, complete before definitely by opening or the first day of the next academic year. But paper must be completed by 30th April. It may take few days in putting things in order, file, box file, etc., etc. और तभी हम ये we could be in a position to say we have learned from our these experiences. So thank you so much. We tomorrow, I'm sure there is a meeting. Dr. Avinash Patil or the Miss Lakshita Soni has issued the invite that IQAC meeting. And if Dr. Lakshita Soni is here, then I'm sure she is listening that IQAC ka how important role is there in this placement activity. So a suitable do's and especially do's, it should be listed and again it can be circulated among all our colleagues to speed up so that the difficulties come on the way can be either eliminated completely or minimized. और कोई DSC करने में इंटरेस्टेड हो या और कोई इस तरीके का न्यू इनिशिएटिव लाने में इंटरेस्टेड हो, मोटिवेट हो रहे हो या to organize international level, national level seminars, workshops, we stand to encourage. We stand committed for that. उस तरफ भी सोचना चाहिए और कहीं भी एकेडमिक ग्रोथ के लिए any kind of help, we all will be there to encourage and support. With this note, anyone else would like to say a minute or so? Otherwise, we will take it. क्योंकि मुझे भी PhD का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तो मैं वो भी शेयर करूंगा, हो सकता है क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे सडन चेंज फॉर ये तो गॉड इज काइंड बोलो या जो भी आप बोलिए, बट आप लोगों के सहकार्य से ही ये कारवा या जो कुछ आप लोगों ने बना दिया है वो बन रहा है. प्रोफेसर अविनाश पाटिल, यू वांट टू से समथिंग? और No, sir, डॉक्टर मीता बोथ हैं क्या? प्रोफेसर मीता बोथ, आई सी हर. क्योंकि अभी तो ये बहुत बिजी होंगी, so हाँ है ना सर. Yeah. whether she would like to say for a minute or so, otherwise definitely after she few days or whenever she is comfortable, we can have. Hello, Meeta madam. Any of the 5 professors present here, 6, any quick response or comment anyone want to give after expressing? Sir, I want to add something over here. Please tell. I want to compliment first to you because definitely such a wonderful idea you brought up. Though you discuss with us, but definitely again it is a brainchild of Dr. Naresh Chandra because you always think quite positively that how other people will get motivated, and at the same time for us also it was a kind of felicitation that we got the opportunity to say and express our feelings because it is kind of a recognition also for us. So thank you so much, sir, for that. It is definitely indeed a wonderful things which you have started. At the same time, I also want to compliment Mahendra and Suranjay. Sir, the whole process of filling the form of, for the professor was initiated by both of them.
I knew that I have to fill the form, but somewhere like I just started and was not able to finish. But when I heard Mahendra and Suranja had already finished their process, it had really pushed me further. So and I also want to compliment. Balkavi for this reason, I have seen the kind of focus work he was doing for last 3 years. Sir. So this is also like something quite inspirational that yes, I have to get it, even if I have I am short of papers, but I will do my focus work. And he was used to sit in the arts faculty and constantly doing his work. So my compliment to all the professors, of course, but that sometimes it happens that something is lacking, but then there is a way to do it by focus and quality work. So congratulations to all of you, and thank you so much, Dr. Naresh Chandra, for this opportunity. Thank you, sir. Very good. ये बात तो सही है. Professor Suranjay was so meticulous. And Yes, he comes from that way, English बात बोले भाई अभी वो खुद ही अपन बोले, but everything. And it is so true. I started thinking again. Sometime when a discussion भाई professor बनाना है, file move होनी चाहिए. We came with कि भाई लाओ सब file तो लाओ फिर भेजे joint director के लिए. yes, sir. So it so happened कि भाई there were few gaps. But now we have learned. So this our experience will help our other colleagues. Yes, sir. और सुरंजय सर तो अपना अभी उसी स्टाइल में सबको करेंगे, मतलब ये दो को करेंगे. वेरी गुड. हाँ सर, लोगों ने डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए. बट ऐसे भी फाइल आए थे मेरे पास, डायरेक्ट किसी का फाइल लेके उसमें खाली नाम चेंज किया है. सो प्लीज डोंट डू दैट. सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू. तो इंफॉर्मेशन तो अपनी ही भरनी है. देर आर नो शॉर्टकट्स. सो यू हैव टू फिल योर ओन इंफॉर्मेशन. जहां भी डाउट आता है डेफिनेटली यू शुड आस्क एंड गो अहेड. क्योंकि मैं और सुरंजय सर वही करते थे हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए, especially teaching plans and calendar and everything we had to put. So we were doing together the things, but definitely the matter हमारा खुद का होता था. So and time पे करो तो it's not difficult. टाइम तो लगता है सर, 6 महीने तो फाइल बनाने में ही लगते हैं सर. प्रोफेसर सपना सबेल हैज बीन द क्या कौन से कैटलिस्ट, वेरी पॉजिटिव एंड सबको ही पुश करने में, मतलब हर चीज में इट हैज बीन. बट सुरंजय सर तुम्हाला अजून का एकाद से बोलायचं आहे, एकाद मिनिट या आवाज नहीं है. खानपेकर सर तुम्हाला यू. Yes, yes, sir. I just want to say, Sapna madam को ही मैं ऐड करता हूँ. It was a long journey, and in fact, Sapna madam would remember that our research was actually started, like we said, long years back. So it was very difficult to control all those papers, sir, because the files were becoming so big. Yes. And like Suranjay sir had worried that like we had to take signatures back, मतलब पहले का लेना. और इस टाइम में सर आपको बताना चाहता हूँ, अविनाश सर ने काफी स्ट्रिक्ट किया है और काफी वो मतलब सारी चीजें लाइन में लाई है कि जो एपीआई है वो उसी साल का उसी साल में खत्म होना चाहिए. आप उनके सामने रखी हुई सारी फाइल्स देख सकते हैं. तो सर हैज टोल्ड एवरीबॉडी दैट यू हैव टू पुट इट टुगेदर. कुछ लोगों को ये भी लगा होगा कि सर स्ट्रिक्ट है, बट थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग सर. यस सर. यस यस. Sir, it is for betterment of everyone. That's right. That is the spirit. या क्योंकि बाकी कमिटी के सामने अपने पेपर नहीं है तो मुंह के ऊपर तो नहीं बोलेंगे, अदरवाइज दे विल से पूरे कॉलेज का रिफ्लेक्शन होता है. सर क्या देख के साइन किया, किसी ने चेक नहीं किया क्या. बिकॉज वी हैड दैट एग्जाम्पल एक्सपीरियंस एट पेंडारकर कॉलेज कि वो फाइल देख के समझ में आ रहा था किसी ने चेक ही नहीं किया है. सो ऑब्वियसली व्हेन वी रिएक्ट अबाउट अदर कॉलेजेस, सो अपने कॉलेज के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए. दैट्स राइट. Yes, Professor Avinash Patil, we can conclude today otherwise. Yes. Good evening, everyone. So it was a great experience listening 5 professors
of the first batch, I will say, from BK Birla College, and definitely two are still remaining. We can request even Dr. Geeta Unnikrishnan to share her experiences as per her convenience, and Dr. Meeta Bhot definitely when she rejoins from her leave, her expression also we will listen. But when we listen to these experiences, their experiences for their career path, we come to know the various things which they have faced. And when we get an opportunity to hear the problems faced by someone and how they have resolved it, we get one chance, I will say, to achieve the best in a easier way. And that's why every one of us must be thankful to all five professors who have shared their experiences and their issues, or I will say the difficulties which faced by them. And that will help all of us to overcome the issues regarding the filling of the form or preparing our file for career advancement scheme. And we wish all the best to the future professors also who are in line. Dr. Swapna Samel always says that there are many in line, there are many in queue. So those who are in a queue, they should gear up and start preparing their files at the earliest whenever they are eligible. And documentation has to be perfect. And once the documentation is perfect, definitely there is no hitch in achieving the goal of a post of professor. And one day we should have more than 20% of the professors, and we will be very proud to say that 20% of our staff, they are the professors. So we thank our today's speaker, Dr. Mahendra Khandpekar and Dr. Balkavi Suranje for achieving their professorship by Career Advancement Scheme. We thank our director, sir, as well as Dr. Swapna Samel and all our colleagues who joined for today's BKVCK expressions. Thank you. Thank you very much. All the best. धन्यवाद सर. धन्यवाद, धन्यवाद. Very good, excellent. Bye. Good night. मेरे साथ भी ऐसे होता है इसलिए आई नो एग्जैक्टली. जो स्टॉक वाला आप बता रहे